Hello everyone. In this video we are going to cover some important numericals of unit number 2, that is linear data structure, from the subject data structure. From stack there are two types of numerical which is repeatedly asked in exam. First one is conversion of infix expression to postfix expression using stack and evaluation of postfix expression using stack. And from Q this type of numericals is asked where your Q may be a simple Q or your Q may be a circular Q. So in this video we are going to solve this all numericals one by one. So first we cover conversion of infix to postfix expression. So before going to the conversion of infix expression to the postfix expression using stack, you must know the precedence of each and every operator. Okay, so exponential is at the highest precedence, then multiplication and division are at the lowest level of the precedence compared to exponential, and this addition and subtraction are even lower level of the precedence compared to division and multiplication and exponential. So in the absence of parentheses, operators at the higher level of the precedence are performed before the operator at the lower level of the precedence. For example, here the highest precedence in this expression is of exponential. Okay, so 2 raised to 3 will be performed first and then 2 raised to 2. Why first 2 raised to 3? Because the associativity of the exponential is left to right. So first left sub expression will be evaluated of the same precedence and then this right one. So 2 raised to 3 is 8 and 2 raised to 2 is 4. Similarly, now in this expression, which are the operators who have the highest precedence? This multiplication sign and division sign. So 5 raised to 4 will be evaluated first because the associativity of the multiplication sign and division sign is left to right. So first 5 into 4, that is 20, then 12 will be divided by 6, the answer is 2. Similarly, the lowest level precedence is of addition and subtraction. So the associativity of addition and subtraction is also left to right. So first 8 plus 20 will be evaluated and then the answer will be minus with 2. So the answer is 26. If there is a parenthesis, suppose we have a parenthesis here like 12 divided by 6. So we know the highest, we have to evaluate this 12 divided by 6 first, because parentheses can be used to explicitly control the order of evaluation of an expression. Okay. Okay, so there are three types of notations, that is infix notation, postfix notation and prefix notation. The infix notation is the simplest notation for humans to read and write, like a plus b. The operator is in between the two operators, but it requires more complex parsing algorithm for computers due to parentheses and operator precedence rules. The prefix and postfix notations are computationally efficient and do not require parentheses or operator precedence tracking. That is why most of the computer or for efficient computation we are using postfix and prefix notations. So what is infix notation? So the typical mathematical form of the expression that we encounter generally is known as infix notation. In infix notation, an operator is written in between two operands. Okay, like a plus b plus c. These all are infix notation. And what is postfix? So in postfix expression, an operator is written after its operand. This notation is also known as reverse Polish notation. For example, a plus b will be written as ab plus. What is prefix? In prefix expression, an operator is written before its operand.
this notation is also known as Polish notation. So instead of infix, that is a plus b, the operator is written before the operand. Now if there is an infix notation, that is a plus b plus c, then how we generate the postfix expression? So if there are the operators which have same precedence, then the associativity of this addition is left to right. So first a plus b will be evaluated. So what is the postfix notation of a plus b? ab plus okay. Now consider this whole as a. Okay, for simplicity, consider this ab plus whole as a. Now what is a plus c? ac plus. So what is your a? ab plus. What is your b? c. Okay, so ab plus c, then this plus operator will be there in the postfix expression. Okay, समझ लो फिर से, ये आपको पता है जब there is a same precedence of this two addition symbol, then the associativity of this operator is left to right. अगर यहाँ पे माइनस होता a plus b minus c, तो भी पहले a plus b ही evaluate होता, because they have the similar precedence. So a plus b, what is the postfix of a plus b? ab plus. Okay, अब ये ab plus को suppose this is your a, because it is already evaluated. Okay, तो ab plus को suppose आप a assume करो, suppose this is a, then what is your remaining expression? a plus c. Okay, a plus c का आंसर क्या होगा? a c plus. तो what is your a? Your a is ab plus. So a b plus पहले वो आएगा instead of a, then the remaining, that is c plus. Is it clear? Okay. So the answer of ab plus c is ab plus and c plus. Similarly for the prefix. Okay. First, which one is evaluated? A plus b is evaluated first, this one. Okay, so what is the prefix of a plus b? Plus ab. Okay, so plus ab is your a plus c. So what is the output? Plus ab and c. Now here b plus c is evaluated first because there is a parenthesis. Okay, so what is the output of b plus c? bc plus, and then bc plus will be treated as b, then it will be added with a. Clear? So what is the output? First the answer is b c plus. Okay, then there is a here, a plus b. Then what is the postfix of a plus bc plus? This considered whole as a, this considered whole as b. Okay, so what is the postfix? a bc plus plus. Is it clear? a bc plus, because this whole b is considered as bc plus. Okay, now this operator, that is plus. Is it clear? Similarly for the prefix. Okay, similarly for the next expression, that is a plus b star c. So first b star c will be evaluated. So what is the postfix? bc star. Consider bc star as a symbol b. Okay, then what is the output of a plus b? ab plus. Clear? Similarly for prefix, postfix and prefix. Okay, before going to infix to postfix conversion using stack, how to find the rank of any expression? Okay, so any expression is valid if the rank of that particular expression is 1. So rank of any variable is 1. Rank of any binary operator is suppose -1. Okay,
So here the rank of variable we know it is 1. The rank of operator is -1. Similarly, the rank of b, that is variable, is 1, and rank of operator, that is -1. If you solve this expression, the answer will be 1. Then and only then the expression is valid. Okay, so before going to the conversion of infix to postfix notation using stack, let me rewind some basic of stack and what is push operation and what is pop operation. So stack follows last in first out principle. Okay, this means the data inserted in the stack last will be first to be removed. And there are many operations in stack, but we are using for conversion only push and pop. Okay, so what is push? Push is a function in a stack which is used to insert the data at the top of the stack. And what is pop? Pop is a function in a stack which is used to remove the data from the top of the stack. Okay, so initially we have to create an empty stack for keeping operators. Okay, and create an empty list for output where our postfix expression will be there. Okay, then read the character list from left to right and perform the following steps. Okay, so these 4 steps are important for converting the infix expression into the postfix expression using stack. Which is the first step? If the character is an operand, means variable, it may be a, b, okay, or maybe numbers. If the character may be character is an operand, append it to the end of the output list. If the character is left parenthesis, push it onto the stack. If the character is right parenthesis, pop the stack until the corresponding left parenthesis is removed. Okay, append each operator to the end of the output list. This whole steps we are going to see with the example also. Okay, if the token is an operator, now it is important. If the token is an operator, it may be multiplication sign, subtraction, addition, division, then you have to push it on the top of the stack. But before doing this, you have to remove if there is any operator already onto already there in the stack that have higher or equal precedence, and append them to the output list. Okay, अगर stack में suppose division पड़ा है, okay, और आप next character read कर रहे हो, वो आ रहा है plus. Okay, stack में division है और जब आप रीड कर रहे हो अपने एक्सप्रेशन को, तब आया सपोज प्लस साइन. ओके, सो प्लस जब भी एनकाउंटर होगा आपको क्या करना होगा? यू हैव टू पुश इट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. बट बिफोर डूइंग दिस, फर्स्ट रिमूव और पॉप एनी ऑपरेटर ऑलरेडी देयर ऑन द स्टैक दैट हैव हायर प्रेसिडेंस. जब प्लस को आप स्टैक में डालोगे, जब आपको चेक करना पड़ेगा कि टॉप ऑफ द स्टैक में अगर उससे हायर प्रेसिडेंस पड़ा हुआ है तो पहले इसे आउटपुट में डाल दो, उसके बाद यहां पे क्या लिखो? प्लस. इज इट क्लियर? अगर ना समझ आया हो तो नेक्स्ट स्लाइड में सारे कंस्ट्रेंट दिए हैं. लेट्स सी. इफ योर स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है और कोई ऑपरेटर आप रीड करते हो तो डायरेक्टली क्या कर देना है? पुश कर देना है वो पर्टिकुलर ऑपरेटर को. क्लियर? इफ ऑपरेटर हैविंग हायर प्रायोरिटी, अगर स्टैक में प्लस पड़ा है, ओके, और नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर जो रीड कर रहे हैं हम वो डिवीजन है, तो कोई बात नहीं, पुश कर देना है ऑपरेटर को. व्हाई? बिकॉज जब स्टैक के अंदर प्लस पड़ा था, हमने क्या रीड किया? डिवीजन साइन विच हैव हायर प्रेसिडेंस कंपेयर टू प्लस. ओके, सो सिंपली यू हैव टू पुश. अगर ये उल्टा होता तो आप हमें डिवीजन क्या करना होता? पहले आउटपुट में डाल देना होता. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द ऑपरेटर हैविंग द सेम प्रायोरिटी,
तो क्या करना है, पॉप करना है पहले किसको, जो पॉप कहाँ से हो सकता है, स्टैक से ही होगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक पे होगा। उसके बाद क्या कर देना है, पुश कर देना है नए ऑपरेटर को। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन साइन इज ऑलरेडी देयर इन द स्टैक, और नेक्स्ट जब हम रीड कर रहे हैं तब क्या आया, डिवीजन आया। तो पहले क्या करो, इसको पॉप कर दो, ये ऑपरेशन हो गया। ओके, पॉप करोगे तो कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में। सिमिलरली फिर किसे पुश कर दो, न्यू ऑपरेटर को। न्यू ऑपरेटर कौन है, डिवीजन। डिवीजन क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे चला जाएगा। इज इट क्लियर? सिमिलरली फॉर प्लस एंड माइनस, स्टैक में क्या पड़ा था, प्लस पड़ा हुआ था। नेक्स्ट इनपुट कैरेक्टर क्या था आपका, माइनस। हम इसे स्टैक में तो डालेंगे, बट अगर सेम प्रेसिडेंस है या हायर प्रेसिडेंस है तो पहले इसे क्या कर देना है, हमें पॉप करना है, और इस ऑपरेटर को कहाँ डाल देना है, माइनस ऑपरेटर को इन द स्टैक। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको क्लियरली पता चल गया देन द एग्जाम्पल विल बी correct. Okay, otherwise you are not getting the full marks. Now the operator having the low priority, for example multiplication sign, और कोई लो प्रायोरिटी ऑपरेटर आता है तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन को पॉप कर देना है। पॉप हो गया, फिर स्टैक के अंदर किसको डाल देना है, प्लस को। ओके, सिमिलरली फॉर दिस if there is no more operand, pop the operator। चलो, ये सारे स्टेप्स जो आगे के 4 स्टेप्स थे प्लस दिस ऑल द ऑपरेशंस, अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। So let us take one simple example. After this example we take some complicated examples. Okay, so conversion of infix to postfix expression. What is our expression? Expression is a plus b into c plus d. So whatever we read, that will be in the input symbol. स्टैक में क्या होगा, सारे ऑपरेटर्स एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा, whatever we pop from the stack and whatever the variable is. Okay, rank is optional, एग्जाम में लिखना है, अगर पूछा गया है तो लिखो, otherwise it's okay. So our first character is a. If the character is variable, append it to the end of the output list. What is our output list? This postfix notation. Okay, so a is a variable, we directly put here, nothing into the stack because still there is no operator encountered. So our next character is operator, that is plus. If the token is operator, push it at the top of the stack. There is no operator in the stack to compare whether the stack operator is higher precedence or lower precedence. We directly push this operator into the stack. Okay, now next input character is opening bracket. So if the left parenthesis is encountered, then we have to directly push it onto the stack. Push onto the stack. Okay, next character is B. If the character is operand, then directly append it at the end of the output list. So here it comes A and B. Next, multiplication sign. Now, what is at the top of the stack? Opening bracket. Not any operator to compare this multiplication sign with that particular operator. But here it is an opening parenthesis. So we don't have to compare. हमें compare करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि top of the stack में क्या पड़ा है? Opening bracket है. We directly push this star onto the stack. Is it clear? अगर यहाँ पे division sign होता instead of opening bracket तो मैं compare करता कि equal precedence है तो पहले division को हटाओ और star को top of the stack में डालो according to step number 4. Okay, so we directly push star into the stack. Next input character is variable.
whenever a variable is encountered, we have to append that particular variable at the output list. We directly append here. The stack is as it is. Now next character is addition symbol. If the token is operator, push it on the top of the stack. ये stack में तो जाएगा. Before doing that, first remove or pop any operator already there on the stack that have higher or equal precedence. Top of the stack में भी क्या है? Multiplication sign है. Not this opening bracket, not this plus. Top of the stack में कौन पड़ा है? Multiplication sign. उसके साथ अब मैं किसे कंपेयर करूंगा? अपने इनपुट सिंबल को. वो क्या है? प्लस है. अगर स्टैक का टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी पड़ा है उसकी प्रायोरिटी इस इनपुट सिंबल से अगर ज्यादा है या सेम है, देन पहले हमें क्या करना है? पॉप करना है वो पर्टिकुलर ऑपरेटर को. अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो कहां चला जाएगा? अपेंड देम टू द आउटपुट लिस्ट, यहां पे. उसके बाद ही मुझे प्लस इंसर्ट करना है. इज इट क्लियर? अगर यहाँ माइनस होता ओपनिंग ब्रैकेट के बाद, तभी भी मुझे ये चीज परफॉर्म करनी पड़ती, बिकॉज इट हैव द इक्वल प्रेसिडेंस. प्लस एंड माइनस हैव द इक्वल प्रेसिडेंस. सो माइनस पहले कहां चला जाता? आउटपुट लिस्ट में, दैट इज इन द पोस्ट फिक्स, एंड देन वी हैव टू इंसर्ट दिस पर्टिकुलर एडिशन साइन. सो अभी स्टार कहां चला जाएगा? सी के बाद, और प्लस कहां आ जाएगा? एट द टॉप ऑफ द स्टैक. इज इट क्लियर? Next one is D. It's a variable. We directly append at the output list. Next one is closing bracket. Whenever the right parenthesis or closing bracket is encountered, pop the stack until the corresponding left parenthesis is removed. Append each operator to the end of the output list. अब मुझे क्या करना है? राइट टू लेफ्ट जाना है. कहां तक? जब तक मुझे ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिले, और सारे ऑपरेटर को पॉप करते जाना है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस. और मुझे वो कहां डालना है? आउटपुट में, दैट इज इन द पोस्ट फिक्स. क्लियर? जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर्ड हुआ, मैं क्या करूंगा? प्लस को पॉप करूंगा और कहां डाल दूंगा? आउटपुट में. ओके, सो ओपनिंग ब्रैकेट भी चला गया. अब ये प्लस जो है वो अकेला बचा, और हमारा इनपुट सिंबल अब क्या है? नथिंग. देयर इज नथिंग ऑफ देयर इन द इनपुट सिंबल. सो वी डायरेक्टली पॉप दिस प्लस एंड अपेंड टू द एंड ऑफ द आउटपुट लिस्ट. Okay, now you can check the rank of this variable is 1. This is also 1. This is also 1. Total 3. This is 4. Okay, and the rank of operator is minus 1. 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 minus 1 minus 3. So 4 minus 3 is 1. So the expression is valid. Okay, अगर ये एग्जाम में दिया गया है कि पैरेलली आपको रैंक भी लिखना है, तभी वो रैंक लिखने की जरूरत है, अदरवाइज चलेगा. Okay, so this is our postfix expression A, B, C star D plus plus of the infix expression A plus B into C plus D. Let's take some difficult or complicated example next. Okay, next example is A plus B star C divided by D $E minus F into G. Now most of the student जिन्हें पता ही नहीं होता है डॉलर सिंबल है क्या, और ट्विस्ट करने के लिए एग्जाम में डॉलर सिंबल आता ही है. इन इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आल्सो, इन कन्वर्टिंग द इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आल्सो. तो इसे याद रखना, दिस डॉलर सिंबल इज ए एक्सपोनेंशियल साइन. ओके, रेज टू, दिस डिनोट्स D रेज टू E. यहाँ पे इतना इशू नहीं आएगा, हमें ये पता होना चाहिए हाँ डॉलर मतलब एक्सपोनेंशियल जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी. ओके, जब आप इवेल्युएट करोगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं, उसमें अगर डॉलर आएगा तो आप इवेल्युएट ही नहीं कर पाओगे. सपोज $2 थी, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑपरेशन में परफॉर्म करूं. 2 + 3 करो, 2 - 3 करो, क्या करो? इट्स ए 2 raised to 3. So 2 into 2 4, 4 into 2 8 is the answer. Okay, so here first character is operand, that is variables. We simply
append it at the end of the output. Next character is plus. There is nothing in the stack to compare, so we directly put this addition sign in the stack. Next is B. B will be directly in the postfix expression. Okay. Next is star. Now star has the highest precedence compared to plus, so we have to push star in the stack. फिर से फोर्थ पॉइंट रिमेंबर करवाता हूं, प्लीज ध्यान से देख लेना. अगर सेम प्रेसिडेंस होता, अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते, इस प्लस को इवेल्युएट कर देते और माइनस यहाँ पे रख देते स्टैक में. बट अभी जो ऑपरेटर आ रहा है दैट हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस कंपेयर टू प्लस, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग दिस स्टार ऑन टू द स्टैक. फोर्थ पॉइंट फिर से देख लो. इफ द टोकन इज एन ऑपरेटर, बिफोर डूइंग दैट फर्स्ट रिमूव pop any operator already on the stack that have highest or equal precedence. Already on the stack that have higher or equal precedence. Plus से equal नहीं है multiplication side, ना ही higher precedence रखता है. Okay, so we have to push this star onto the stack. Is it clear? Next one is variable. We directly append at the output. Now division sign. Okay. We have to push this division sign, but before doing that, pop any operator already on the stack that have higher or equal precedence. Higher तो नहीं है multiplication sign, but there is an equal precedence of multiplication sign and division sign. Okay, so हमें इसे क्या करना होगा, pop करना होगा. So star will be here. आप बोलोगे सर चलो प्लस है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस की जगह यहाँ पे कोई और ऑपरेटर होता, स्टार तो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज ये जब स्टार आया तब उसे इवेल्युएट हो जाना पड़ता. इज इट क्लियर? सो डिवीजन स्टैक में डालने के पहले चेक करना है आपको कि जो टॉप ऑफ द स्टैक पे पड़ा है उसकी प्रेसिडेंस इनपुट कैरेक्टर की प्रेसिडेंस सेम है या उससे हाईएस्ट है. अगर स्टैक में पड़ा हुआ टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी ऑपरेटर पड़ा है उसकी प्रेसिडेंस अगर हायर है, देन यू हैव टू अपेंड टू द आउटपुट लिस्ट. ओके, so division will be there, but star will be at the postfix notation, append at the output list. Is it clear? Now next character is D. D is a variable, directly put or append to the end of the output list. Next one is dollar, which have the highest precedence. Okay, अगर highest precedence है तो हमें simply क्या कर देना है, put कर देना है onto the stack. अगर इक्वल और उससे लोअर आता इनपुट में तो ही हमें स्टैक में से क्या करना होता, पॉप करना होता. इज इट क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टर इज ई, विच इज ऑल्सो वेरिएबल और ऑपरेंड, सो वी सिंपली अपेंड एट द एंड ऑफ द आउटपुट लिस्ट. नेक्स्ट इज माइनस. ओके, सो इनपुट कैरेक्टर इज माइनस, टॉप ऑफ द स्टैक में क्या पड़ा है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस. Okay, any operator already on the stack that have higher or equal precedence and append them to the output list. तो हमें माइनस स्टैक में डालने के पहले इस डॉलर को क्या करना होगा, आउटपुट लिस्ट में ले जाना होगा. सो यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर. फिर मैं कंपेयर करूंगा टॉप ऑफ द स्टैक में क्या बचा है, डिवीजन साइन. डिवीजन और माइनस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, डिवीजन की. तो डिवीजन भी कहाँ चला जाएगा, आफ्टर द डॉलर. ओके, वो भी पॉप हो जाएगा. फिर टॉप ऑफ द स्टैक में क्या पड़ा होगा, एडिशन, विच हैव द इक्वल प्रेसिडेंस टू द माइनस. ओके, इक्वल भी होगा तो हमें क्या करना है, पॉप करना है. तो बाद में क्या चला जाएगा, प्लस भी कहां चला जाएगा, एट द आउटपुट. ओके, एंड ओनली वन ऑपरेटर इज देयर ऑन टू द स्टैक, दैट इज माइनस. फर्स्ट डॉलर के साथ कंपेयर किया, उसे पॉप किया. देन डिवीजन के साथ माइनस को कंपेयर किया, हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया. दैट्स व्हाई फर्स्ट डॉलर एंड देन डिवीजन साइन. फिर हमने माइनस को कंपेयर किया किससे, प्लस से, विच हैव द सेम प्रेसिडेंस. तो हमें क्या करना पड़ा, उसे भी पॉप करना पड़ा और एट द एंड ऑफ द आउटपुट लिस्ट अपेंड करना पड़ा. अब स्टैक में क्या बचा, ओनली माइनस. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर इज ओपनिंग ब्रैकेट. अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो वी हैव टू सिंपली पुश इट ऑन द स्टैक. Okay, next one is F. F is a variable, directly append at the output list. Next character is
Multiplication sign. Multiplication sign is an operator, so directly push into the stack. Okay. Next one is variable. We have to append at the output list. And next character is closing bracket. If the character is right parenthesis, pop the stack until the corresponding left parenthesis, here it is a left parenthesis, is removed. Append each operator to the end of the output list. अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमें क्या करना है, जो भी ऑपरेटर है उसे क्या करना है, पॉप करना है और कहाँ डालना है, एट द आउटपुट लिस्ट विच इज अवर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. इज इट क्लियर? अब बचा क्या, माइनस. हमें कहाँ तक जाना था, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो until the left parenthesis. ओके, तो हम लेफ्ट पैरेंथेसिस गए, लेफ्ट पैरेंथेसिस में सिर्फ एक ऑपरेटर था, इसलिए सिर्फ एक ऑपरेटर ही आउटपुट में गया, अभी माइनस तो बाकी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज empty. There is nothing to scan, so we have to pop this minus into the postfix expression. अगर यहाँ पे दो ऑपरेटर होते सपोज माइनस एंड डिवीजन साइन, तो पहले हमें माइनस को पॉप करना पड़ता, फिर डिवीजन साइन को. जो भी टॉप ऑफ द स्टैक में रहेगा that will be popped first and appended to the output list. So this is our postfix expression. I hope you understand this whole process. हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ऑपरेटर जब आता है वही ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी वेरिएबल्स आ रहे हैं we have to directly push or append to the output list. Okay, so these are the some questions which are asked in GTU. ये हमने अभी भी सॉल्व किया, which of 7 marks asked in 2018. okay, this is also very simple. अगर यहाँ पे आपको डॉलर साइन की प्रेसिडेंसी नहीं पता होती, डॉलर साइन क्या इंडिकेट करता है वही नहीं पता होता, तो ये पूरा सम आपका गलत हो जाता. ओके, सो डॉलर साइन इंडिकेट्स एक्सपोनेंशियल साइन. नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू देयर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट. यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा गया है कि using stack, so you have to directly convert this infix expression to prefix and postfix. Is it clear? अगर stack से आपको करने कहा गया हो तभी आपको output list, input symbols रखना है, otherwise कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे अगर हम what is the postfix notation, first a into b will be evaluated, so ab plus ab star will be there. Okay, let's see the output of these two. This first one and this one is second. Okay, first a into b will be evaluated, so ab star. Okay, then c into c divided by d will be evaluated, so cd. Then this whole is your a and this whole is your b. Okay, so this is already evaluated, this is already evaluated, so simply put this plus sign at the end of the postfix notation. Similarly for the prefix, this all things we already covered in very first slide. Okay, the next topic is evaluation of postfix expression. So in this we see how the postfix expression is evaluated by the machines, because nowadays most of the machines are uses postfix expression to evaluate any expression, because they have some advantages, like any formula can be expressed without parentheses. It is very convenient for evaluating formulas on computer with stack. Postfix expression does not have any operator precedence. Also, it is slightly easier to evaluate compared to prefix. It also reflects the order in which operations are performed. That's why most of the machines are using postfix expression to evaluate any expression. So how we are going to evaluate with the help of stack? You have to keep these 4 points in mind, that each operator in the postfix string refers to the previous two operands in the string. Okay, a plus b is an infix expression. What is the postfix expression? A b plus. So that plus refers to the previous two operands in the string. Okay, so each time we read an operand, we push that particular operand into the stack.
When we reaches an operator, its operand will be top two elements on the stack. This all I will explain you in the next slide with the help of example. Okay. We can then pop these two elements, perform the indicated operations, it may be multiplication, division, or subtraction on them, and push the result on the stack so that it will be available for the use as an operand for the next operator. Okay, let's understand with the help of example. So here the expression is 562 minus plus. This is a postfix expression. We have to evaluate and get the answer. Okay, so according to that 4 steps, first there is an empty stack. If a variable or operand is encountered, what we do? We push into the stack. Okay, first we read 5. Is it an operand? Yes. Then you have to push into the stack. Next, read this 6. 6 is an operand? Yes. Then you have to push into the stack. Next, 2. 2 is also an operand. Okay, then we have to push into the stack. Now, when this operator encountered, the last two element, the last two operand will be, the last two character will be the operand of that particular operator. Okay, so when we read this minus, is it an operator? Yes. We have to pop which two symbols? First two symbols from the top of the stack and perform the operation and push the result onto the stack. So 5 is as it is. Okay, 6 minus 2 is 4. So 4 will be at this place. Okay, whatever at the top of the stack will be your operand 2. Whatever at the below that particular top of the stack, that will be your operand 1. This you have to keep in your mind. Okay, जो टॉप ऑफ द स्टैक पे होगा वो आपका ऑपरेंड 2 होगा और उसके नीचे जो एलिमेंट होगा स्टैक पे वो पॉप होके कहाँ चला जाएगा? एज एन ऑपरेंड 1. और जो भी आपने ऑपरेटर रीड किया है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये दो ऑपरेंड के बीच में. ओके, सो 6 minus 2 is 4. Okay, so next element is plus. Okay, first we have to pop two symbols. Two symbols are 4 and 5. 4 कहाँ जाएगा? ऑपरेंड 2. 5 कहाँ जाएगा? ऑपरेंड 1. Okay, so 5 plus 4 is 9. So read the next symbol. If it is end of the string, string है हमारे पास अब नहीं है, then pop that particular answer from the string. So 9 will be the answer. Is it clear? Okay, let's see with the complicated example. 5 4 6 plus star 4 9 3 division plus and star. First is operand, operand, operand. Okay, so this all will be pushed into the stack. Now plus is encountered. What is your operand 2? 6. And what is your operand 1? 4. So 4 plus 6 is 10. 10 will be pushed in the stack. Next is multiplication sign. What is your operand 2? 10. What is operand 1? 5. So 5 into 10 is 50. It will be pushed into the stack. Next, we read 4, 9 and 3. Okay, so first 4 will be pushed, then 9, then 3. Okay, now which operand operator is encountered? Division. Okay, so which sub expression will be evaluated? 9 divided by 3, because operand 2 is 3 and operand 1 is 9. 9 divided by 3 is 3. Answer is pushed into the stack. Now second operator is, next operator is plus. So what is your operand 2? 3. And what is your operand 1? 4. So 4 plus 3. 4 plus 3 is 7. That will be pushed into the stack. Now at the last, this multiplication sign will be encountered. Now what is your operand 2? 7. What is your operand 1? 50. 50 into 7 is 350. Now there is no input symbol left. Okay,
So 350 will be popped as an answer. Now, if there is a smaller postfix expression, you can show the operation using that stack that we previously done. Okay. If there is a bigger expression, then you can also perform this tabular method, like first input symbol, what operation you perform, what is into the stack, and what are the calculation. This is simplest compared to drawing that particular stack every time. Okay. So here first 7 will be encountered. 7 is our input symbol. Then we have to push into the stack because it's an operand. Okay. Similarly, then 6 is also an operand. So we have to push into the stack. 7, 6. Now plus. Whenever operator is encountered, the last two element will be popped and we have to evaluate 7 plus 6. Okay, operand 2 is 6, operand 1 is 7. 7 plus 6 is 13. So 13 will be pushed into the stack. Okay, now what is into the stack? 13. What is our next symbol? 4. So 4 is an operand, we simply pushed into the stack. Now multiplication sign. So what is our operand 1? 13. What is our operand 2? 4. So 13 into 4 is 52. 52 will be pushed into the stack. Clear? Next 4. 4 is an operand. We simply push into the stack. Now next one is 10. 10 is also operand. We simply push into the stack. Now plus. Plus means we have to addition with 4 and 10. Okay. Top of the stack is 10. This is your operand 2. This is your operand 1. 4 plus 10 is 14. 14 will be pushed into the stack. Next one is minus symbol. Okay. So which two are the operand? 52 minus 14. What is 52 minus 14? 38. So 38 is pushed into the stack. Next symbol is 5. It's an operand. We have to push into the stack. Now addition symbol, 38 plus 5 is 43. We have to push the answer into the stack. Now the input string is empty. So 43 will be popped as an answer or result. Let's take another example. Okay. There is one question asked in GTO exam that evaluate the following postfix expression using stack, show the steps. But the following expression is not the postfix expression. You can see here 2 raised to 3 plus 5 into 2 raised to 2 minus 12 raised to 16. This is not a postfix expression. ऐसे टाइम पे पहले आपको इसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना होगा postfix expression में like this, and then you have to evaluate and show the step. Okay, if there is already given the postfix expression, then it is good. Otherwise आपको पहले उसको postfix में डायरेक्ट कन्वर्ट करना होगा, not that tabular method, because वो बहुत लेंदी हो जाएगा. Okay, डायरेक्टली उसे कन्वर्ट करो, उसके बाद इवेल्युएट करो यूजिंग स्टैक. Is it clear? Now this dollar symbol, once again I am telling you, it's a raise to symbol, that is exponential 2 exponential 3. अगर यहाँ पे आपको डॉलर का मीनिंग ही नहीं पता होगा, you are not able to evaluate this particular expression even you know the method. Okay, so this dollar symbol, always keep in mind, that is an exponential symbol. Let's take on this example. So after converting that infix expression into postfix expression, our expression is $23.522 multiplication sign plus 12 $6 minus. Now what is our input stream? 2. 2 is a operand, so we simply push into the stack. Next is also operand, we directly push into the stack. Now the operator, that is raised to symbol. Okay, so last two element, this is operand 1, 2 is operand 1 and 3 is operand 2. So 2 raised to 3, 2 into 2 4, 4 2 is 8. 8 is the answer.
Is it clear? Okay, now 8 will be pushed into the stack. Now next input is 5. Okay, next is 2, push into the stack, 2, push into the stack. Next one is dollar. When dollar is encountered, then what is our 2 operand? 2 operand 1 is 2, operand 2 is also 2. So 2 raised to 2 is 4. 4 will be pushed into the stack. Okay, then multiplication sign is encountered. Now which are our operand 1? 5. What is our operand 2? 4. 5 into 4, 20. Okay, so 20 will be pushed into the stack. Next one is plus. Once again operator is encountered. Which are the two operands? 2 and 20. So 8 and 20. 8 plus 20 is 28. 28 is pushed into the stack. Now next symbol is input stream is 12. Simply pushed into the stack. Next is 6. Simply push into the stack. Next one is dollar. Dollar means raised to sign. Which are the two operands? 12 and 6. So 12 raised to 6 is 2985984. Okay, push into the stack. And next symbol is minus. Whenever operator is encountered, what is our two operand? Operand 1 is 28, operand 2 is 2985984. So 28 minus this number gives minus 2985956. Then push it into the stack. The input string is empty. At that time we have to pop this particular answer as a result. So this is how you have to evaluate the postfix expression. Okay, the next example is of Q and circular Q, which will be asked in GTO examination. But I hope you know the fundamentals of Q, what is Q, what is front and what is rear. Then also I remind you that Q can be defined as an order list which enables the insertion operation to be performed at one end, that is known as rear, and deletion operations to be performed at another end, that is known as front. So Q is referred as first in first out. तो बेस्ट एग्जांपल एक दो तो जब हम रेलवे टिकट लेने के लिए एक लाइन में खड़े रहते हैं, जो फर्स्ट होगा उसे फर्स्ट टिकट मिलेगी, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके बाद ही नेक्स्ट पर्सन को मिलती है. इज इट क्लियर? एंड द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ क्यू इज लाइक इट इज यूज्ड फॉर वेटिंग लिस्ट फॉर अ सिंगल सेट रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर. आप जब कंट्रोल पी करते हो, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो, तुरंत दूसरे डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर रहे हो, जबकि फर्स्ट डॉक्यूमेंट अभी प्रिंट ही हो रहा है, तो सेकेंड डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाएगा? आपका क्यू में. ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन buffering, like in most of the applications like MP3 media player, CD players. Okay, it is used to maintain the playlist in the media player in order to add and remove the songs from the playlist. It is also used in operating system. Most of the Q का used operating system में for handling the interrupts. Okay, so these are the applications. So what you have to keep in mind कि rear से हम क्या करेंगे? Insertion perform करेंगे. Front से क्या करेंगे? हम deletion perform करते हैं. Is that clear? जो front मतलब जो आगे खड़ा है वहीं से deletion perform होगा. Okay, let's take this example that perform the following operation on a queue with size 4. So the maximum size of queue is 4. 4 से ज़्यादा डेटा हम एंटर नहीं कर सकते. And draw the queue after each operations. Okay, first we have to insert A, insert B, insert C, delete A, delete B, insert D, insert E. So according to algorithm, front and rear are marked as 0. अगर आप C प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे -1 होगा फ्रंट एंड रियर. वाई? बिकॉज हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट होता है? एरे के इंडेक्स 0 से. दैट्स वाई एट दैट टाइम यू आर टेकिंग -1. बट हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट्स वाई वी आर टेकिंग 0 फ्रंट एंड रियर. Okay, so first we have to insert A. So whenever we insert A, so rear will be incremented by 1 and front is also incremented by 1. अगर एक ही पर्सन अगर रेलवे स्टेशन टिकट लेने के लिए खड़ा है तो वही आपका फर्स्ट होगा, वही आपका लास्ट होगा. इज इट क्लियर? अगर दो होंगे
तो रियर कहाँ चला जाएगा, सेकंड पर्सन के पास. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ इंसर्ट B. Whenever we insert B, what is the value of rear? The value of rear will be incremented by 1 according to algorithm. Please algorithm एक बार देख लेना. I am directly explaining you the numericals. Numericals देखने के बाद भी अगर आप algorithm देखते हो तो you are easily understand. Okay. So the next element is B. The rear is first incremented by 1 and then we are inserting that particular B in the queue. Next, insert C. So rear will be once again incremented by 1 and we are inserting C in the queue. Now delete A. Now first person suppose will be first person का अगर suppose मैं रेलवे टिकट की ही बात करूँ, विंडो की, अगर फर्स्ट पर्सन को टिकट मिल जाती है तो ऑब्वियसली फ्रंट में कौन होगा, अब B होगा. ओके. सो व्हेनेवर वी डिलीट A, the front will be incremented by 1. Whenever we insert one element in the queue, then the rear will be incremented. Whenever we delete any element from the queue, then front will be incremented. Okay. So the value of F will be 2. So next one is delete B. Once again we are deleting. So the value of F will be incremented with 1. So F is equal to 3 and R is equal to 3. Okay. Next is insert D. Whenever we inserting the rear pointer will be incremented by 1. Okay. So R equal to 4, F equal to 3. Next, insert E. Now this is a simple queue. Okay. अगर आपको इंसर्ट ई दिया है एग्जाम में तो आपको बताना है क्यू इज ओवरफ्लो, रियर इज नॉट एबल टू गो एट द फर्स्ट पोजीशन बिकॉज इट्स अ सिंपल क्यू. यही अगर सर्क्यूलर क्यू होता तो रियर किसे पॉइंट करता, फिर से फर्स्ट इंडेक्स को, अगर वो खाली होता तो. इज इट क्लियर? सो सिंपल क्यू में दिस इज नॉट पॉसिबल दैट रियर विल बी once again set to 1, but in circular queue it is possible. So simple queue का disadvantage क्या है, even there is a free space we are not able to insert any element at that particular place. Okay, जो इसका ये disadvantage है उसे कौन ओवरकम करेगा, सर्क्यूलर क्यू ओवरकम करेगा. इज इट क्लियर? सो एग्जाम में अगर इंसर्ट ई करने को है तो प्लीज राइट इट डाउन, द क्यू इज ओवरफ्लो. ई लिख के मत आ जाना, अदरवाइज पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा. Okay, so queue is overflow but space is there with queue. This leads to the memory wastage. मेरे पास है जगह फिर भी मैं queue में ऐड नहीं कर पा रहा हूँ. Okay, so this is the example of simple queue, not a circular queue. Next example हम देखते हैं circular queue. Same example लेके how we can insert particular E. Okay, so this is an example with circular queue. The same example with circular queue. Perform the following operation on circular queue with the size 4 and draw the queue after each and every operations. Okay. तो starting के सारे steps same रहेंगे as per previous one. Okay. Insert A, then insert B. Rear will be incremented by 1. Then insert C. Rear will once again incremented by 1. Then delete A, front will be incremented by 1. Then delete B, front will be once again incremented by 1. Insert D, rear will be incremented by 1. Now insert E. Now rear will be set to 1 instead of queue overflow. This is the advantage of circular compared to simple queue. Okay, so rear, if the place is there, if there is A and B here, we are not able to put this pointer at 1 because the data is already there. Here the data is not there, so first we check is it empty. Okay, or if front value is not equal to 1, then and only then we are able to insert E at
this position, and what is the value of r now? 1. ओके, सो अगर सर्कुलर क्यू आता है तो ही आपको r इक्वल टू 1 करके यहाँ पे स्टॉप हो जाना है. अगर सिंपल क्यू है, अगर मेंशन नहीं किया है कि द गिवन क्यू इज अ सर्कुलर क्यू, देन आपको बता देना है द क्यू इज ओवरफ्लो. The next example of circular queue is, consider the following queue where the queue is a circular queue having 6 memory cells where f equal to 2, r equal to 4. अगर f equal to 2, r equal to 4 नहीं दिया है, q आपको दिया है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट की वैल्यू क्या है 1 and 2, and what is the value of rear 1, 2, 3 and 4. Is it clear? Okay. So there are total how many cells are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So our number of cells are equal to 6. That is already given. So हम इसे अलग मेथड से भी कर सकते हैं. अलग मेथड इन द सेंस, हमें हर बार अगर क्यू नहीं दिखाना है तो एक टेबुलो मेथड से भी आप इजीली इसे परफॉर्म कर सकते हो. ओके, इट्स अ टाइम, वो हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. दिस विल बी एफिशिएंट. देन व्हाट इज द क्वेश्चन that describe queue as the following operation takes place. f is added to the queue, 2 letters are deleted. यहाँ पे letters आपको बताया नहीं कि कौन सा डिलीट हो रहा है, बट आपको पता है कहाँ से डिलीट होगा, फ्रंट से ही डिलीट होगा 2 letters. ओके, देन r is added to the queue. ऐड कहाँ से होगा? रियर से होगा. s is added to the queue and 1 letter is deleted. ओके, queue हमें पता है सर्कुलर queue दिया है. So what is our initial position of queue? A, C, D और 2 सेल्स खाली हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन. इज इट क्लियर? एंड आगे फर्स्ट सेल हमारा खाली रहेगा क्यू, सर्कुलर क्यू. नेक्स्ट फर्स्ट ऑपरेशन क्या करना है कहा गया है? F इज एडेड टू द क्यू. इफ F इज एडेड टू द क्यू, ऑब्वियसली रियर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी. और F कहाँ ऐड होगा? लास्ट में. इज इट क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ रियर इज 5. यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ रियर इज 5. ओके, नेक्स्ट 2 लेटर्स आर डिलीटेड. 2 लेटर्स डिलीट होंगे तो वो आगे से ही होने वाले हैं. ओके, तो A एंड C विल बी डिलीटेड. तो पहले फ्रंट की वैल्यू कितनी थी? 2. अब क्या हो जाएगी? सीधा यहां पॉइंट करेगा, दैट इज 4. ओके, द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ रियर इज 5. नेक्स्ट R इज एडेड टू द क्यू. देयर इज अ सेल आफ्टर F. यस, देयर इज अ स्पेस. So the value of rear is 6 and the value of front is as it is 4. S is added to the queue. Now S अगर ऐड हो रहा है, this queue is a circular queue. क्या चेक करेगा? क्या फ्रंट की वैल्यू 1 है? नहीं है, फ्रंट की वैल्यू 1 नहीं है. अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है, that means there is a data at the first position. Okay, according to algorithm. एक बार algorithm देखना, you are clear and clearly understand that algorithm also now. Okay, now S is added. So S कहाँ जाएगा? रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. यू कैन सी हियर. बट फ्रंट की वैल्यू एज इट इज रहेगी, दैट इज 4. क्लियर? अभी फ्रंट में कौन खड़ा है? D ही खड़ा है. एंड द लास्ट वन इज 1 लेटर इज डिलीटेड. डिलीशन कहाँ से परफॉर्म होगा? फ्रंट से. सो व्हाट इज एट द फ्रंट? D था, तो D को हमने डिलीट कर दिया. अब हमारा फ्रंट कहाँ चला गया? फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई? 5. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियर एज इट इज? दैट इज 1. सो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल ये टेबुलो मेथड से भी आप करोगे, देन ऑल्सो यू गेट द फुल मार्क्स. यू कैन डू दैट प्रीवियस मेथड ऑल्सो. हर जगह पे फ्रंट एंड रियर की वैल्यूज, बट आपको दिखा नहीं है, सो दैट एग्जामिनर विल गिव्स द मार्क. अदरवाइज आप फटाफट करके तो निकल जाओगे. फ्रंट और रियर की वैल्यू अगर नहीं रिप्रेजेंट करते हो तो इट मे बी पॉसिबल कि हाफ या 1 मार्क्स आपके कट हो जाए. ओके, I hope you understand the numericals of stack and queue. If you have any query in evaluating the postfix expression or converting the infix expression to postfix expression, please contact me. Thank you.